Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on HornbillTV. A brief spell of around 20 minutes of rain on Sunday afternoon caused significant waterlogging on the Kanapara-Jorabat road, disrupting public transport and affecting traffic movement. Several stretches of the road were flooded following the rainfall, leading to traffic congestion and difficulties for commuters and public transport vehicles. The sudden waterlogging once again highlighted the recurring drainage and waterlogging problems along the busy Kanapara-Jorabat corridor during heavy rainfall. The Northeast Frontier Railway NFR is making significant progress towards the commitment to green energy and sustainable railway operations through the expansion of solar power infrastructure across its divisions and units. As a major green energy milestone, 23.7 MWP of solar power capacity was commissioned from January to July 2026, the highest among all zonal railways of Indian Railways. With this achievement, the total installed solar capacity across NFR has reached 42.1 MWP as of July 2026, since the inception of its solarization initiative in 2011. Among the divisions, Lumding division, including the Guwahati portion, has achieved the highest cumulative solar power installation. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत में अभी सौर ऊर्जा का एक विस्तार हो रहा है। सोलर पावर का जनरेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसमें भारतीय रेलवे भी अपना योगदान दे रही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में भी पिछले 2-3 सालों में सोलर पावर जनरेशन के ऊपर बहुत फोकस किया गया है और अभी तक हम लोग कुल 42 मेगावाट पीक का सोलर जनरेशन कैपेसिटी अभी तक हासिल कर चुके हैं, जो कि पूरे भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा है। और ख़ास करके पिछले 6 महीने में ये 23 मेगावाट पीक का कैपेसिटी जनरेशन कंप्लीट किया गया है। बहुत सारे मेजर स्टेशंस में 200 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों पे अभी सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और वहाँ पे सोलर पावर का जनरेशन हो रहा है, जिससे कि जो हमारी रेलवे की जो बिजली की खर्च है वो उसमें कमी आ रही है। पिछले 2 साल में हम लोग करीब 13 करोड़ रुपए की बचत कर पाए हैं सोलर एनर्जी के जनरेशन से, और आगे भी अब और 9 मेगावाट पीक का काम अभी चल रहा है। बहुत जल्द ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रोसेस हमारी जारी रहेगी। जैसे कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में हम सारा हमारे जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा का पूरा हम सोलर एनर्जी से फुलफ़िल कर रहे हैं। इसी तरह हम और भी स्टेशनों पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस है वो हम सोलर पावर से कर सके, जिससे कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है उसमें भी कमी आती है। और साथ ही साथ ये जो एक पूरे भारत में ये एक मिशन है जो कि हम सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हम करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ है साथ ही साथ एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत समग्र भारतते इतिया सोलर एनार्जी বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে কাম চলি আছে আৰু ভাৰতীয় ৰেলৱেও ইয়াতে নিজৰ অৱদান দি আছে। পূৰ্বোত্তৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান পৰ্যন্ত 42 মেগাৱাট পিক কেপাচিটি সোলাৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত বিশেষ কৰি যোৱা 6 মাহত
প্ৰায় 23 মেগাৱাট পিক কেপাচিটি আমি বৃদ্ধি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া যোৱা 2 বছৰৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 13 কোটি টকা মানৰ খৰচ আমি কম কৰিব পাৰিছোঁ যি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিত খৰচ হয় তাতে প্ৰায় 13 কোটি টকা মানৰ আমি ৰিডাকশ্যন কৰিবলৈ সফল হৈছোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ আৰু 9 মেগাৱাট পিকৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে যোনটো আমি অহা কেইমাহমানৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিম নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ প্ৰায় 200টা মানতকৈও অধিক ৰেলৱে ষ্টেচনত ইতিমধ্যে সোলাৰ পেনেলছ লগোৱা হৈছে লগতে আমাৰ ৰেলৱে অফিচ ৱৰ্কশ্বপ আৰু বিভিন্ন ৰেলৱে কলনীটো এয়া লগোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত আমি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি যি খৰচ হয় তাৰ লগতেই আমাৰ যি সোলাৰ এনাৰ্জি বৃদ্ধি কৰাৰ এটা ওভাৰঅল নেশ্যনেল লেভেলৰ যোনটো আমাৰ এটা মিছন আছে যে আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ব্যৱহাৰ বেছি কৰিব লাগে আৰু লগতে যি আমাৰ ফসিল ফুয়েল আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰভেশ্যনৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখি আমি এই পথত আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ A large number of Mera Paibi women torchbearers activists carried out a massive torch rally along Didim Road on Sunday night, continuing to ask for an update to the National Register of Citizens NRC before the census exercise. The rally was organized by the Campaign for Justice and Fair Delimitation JFT and commenced from Kwaketil, Nangna Pitong and processed along the Didim line under heavy police protection before marching towards Keshamtom via Mayai Lampi and the Keshampa traffic junction. आज इसी रात में मणिपुर की जितने भी महिलाओं ने इसी समय इसी रात में सब बाहर निकल के एनआरसी के बारे में जो जितने भी अथॉरिटी से इंडिया के और स्टेट के वहाँ की इनकी कान पे पहुँचने के लिए ये बोलना चाहते कि बिफोर सेंसस ये एनआरसी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज ए सिटीजन यहाँ पे असली सिटीजन निकालना पड़ता है क्योंकि ये बाहर से मणिपुर में बहुत सारे नॉन एथिक्स ये नॉन मणिपुरी और नॉन एक्चुअली सिटीजन जो है वो मणिपुर में आके रह रहे हैं इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं इसी को कंट्रोल करने के लिए जितने भी महिलाओं ने ये एनआरसी करना बहुत ज़रूरी है ये नॉलेज जो है मणिपुर के और जितने भी स्टेट के और इंडिया की गवर्नमेंट की कान तक पहुंचने के लिए आज ये रैली कर रहे हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी अथॉरिटीज़ ने ये मानना पड़ता है ये नहीं मानेगा तो मणिपुर तो सोलो इंडिया को भी बस नहीं पाएगा ये बोलना चाहते हैं हम लक्ष्मी है और हम मैं कोंगपाल चिंगामम लकाई से है और हमारे मेरा पाइबी का नाम अवांग कोंगपाल अपुनबा मेरा पाइबी लुप तिनसिरोच और ये आज हम मेरा रैली जा रहे हैं उसका वजह ये है कि सेंसस करने से पहले एनआरसी करने के लिए हम जा रहे हैं इसका आवाज़ उठाने के लिए और जो भी पर आज तक 3 साल से जो मणिपुर में हो रहे हैं हिंसा खून खबरें हो रहे हैं और आईडीपी लोग अभी घर तक नहीं जा सकी पर उसके बदले ये लोग सेंसस करने के लिए कर रहे हैं ये हमें इसका डर है कि सेंसस पहले कर लेंगे तो एनआरसी करने से सेंसस करने से जो हम लोग मणिपुरी इंडिजिनस पीपल लोग तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एक्सटिंक्ट होने का हमें डर है पर उनको कुछ सरकार को कुछ इसका भी कुछ सोचना नहीं है ये लोग तो हमें एजुटेशन जो भी कर रहे हैं इसके अपोज करके वो लोग तो हमें घायल कर रहे हैं वो लोग टीयर गैस चला के वो स्टूडेंट से लेकर बुरी मेरा पाइप तक वो लोग हमें घायल कराते रहे हैं अभी तक after implementing NRC सेंसस करने का मतलब नहीं है हमारे जो सेंसस करने से हम लोग तो इंडिजिनस लोग तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इसके लिए हमें कंडेम कर रहे हैं तो दीदी आप लोग का अभी जो रैली चल रहा है आप लोग का खास मांग क्या है खास मांग नो एनआरसी नो सेंसस इज अ खास मांग ये है और हम लोग
कोंगपाल थोंगोंग से लेकर लमलोंग तक जाएंगे। नाम है एल जितामणि देवी, मैं थौदाम लेकर के मैरा पाइपी के मेंबर हूँ। मैं आज हम लोग ने जो जा रहे हैं रिले, वो हम एनआरसी से पहले हम लोग सेंसस से पहले एनआरसी करना है, क्योंकि हम लोग मणिपुर लोग कितना 3 साल से हम लोग जल रहे। हम लोग मणिपुर सरकार भी कुछ नहीं बोले और इंडिया सरकार भी कुछ नहीं बोल रहे। अभी हम लोग एनआरसी ये करने के बाद हमारा मणिपुर क्या होगा, जलेगा डूबेगा क्या है, कुछ पता नहीं चला है। इसीलिए हम लोग जब तक हमारा सोच, हमारा जो हमने जो मांगा है पूरा नहीं होगा, तब तक हम लोग चलते रहेगा। और दिन रात हम लोग रोड पे हो, कहीं भी हो, हम लोग मणिपुर के लिए हम लोग मरेंगे नहीं, जिंदा रहेगा। कब तक हम लोग मणिपुर सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं बोलेगा, तब तक हम दौड़ते रहेगा, भागते रहेगा। जिस दिन जो होगा तब हम लोग शांति होगा। मणिपुर सरकार की तरफ से हम लोग माफी मांगना चाहती हूँ, क्यों हम मांगना भी चाहती हूँ। जो मणिपुर का जो सीएम और जितना भी जो मिनिस्टर, एमएलए, ये लोग भी हमने जो रो रहे, मणिपुर इमा लोग, भैया लोग, भाई लोग और छोटा छोटा बच्चा लोग जितना जो दुखी हो रहे, रो रहे, उसको बचाने के लिए ये लोग कुछ करेगा, हमारा मन में वही सोची। थैंक यू। मतलब अच्छा, हम लोग ये जो क्या बोलती है खुराई अपन बा, मतलब खुराई थोकदाम लेकर खुराई ओहोंगे, खुराई वो सिंगाम लेरा, जितना भी जो खुराई के मेंबर है, हम यहाँ से लमलोंग बाजार से शुरू करेगा। उसके बाद हम लोग ने बहुत लंबा किया था मिनुथोंग तक जाने के लिए। हाँ, मिनुथोंग क्रॉस करके फिर वो कोनुंग मोमांग जाके वो करना था, लेकिन कुछ ये लोग ने मतलब शॉर्ट करने के लिए बोला है, इसीलिए हम तेली बत्ती से ऐसे आ सकता है। अगर परमिशन मिलेगा तो हम दूर जाएंगे। हम लोग गणपति थोंग को गए थे, नुपी लोग मेरा पाई भी है। आज के रैली के बाद में क्या? आज के रैली के लिए हम लोग को मणिपुर को विदेशी लोग ने कब्जा कर लिया है। हम लोग को इसको हटाने के लिए हम लोग नो एनआरसी, नो सेंसस और चिल्ला रहे हैं, और ये नो आईडीपी स्टेटमेंट, आईडीपी नो सेटलमेंट, नो सेंसस। इसके लिए हम लोग का मणिपुर सरकार से पहुंचने के लिए हम लोग इस रैली आया है। तो कई सालों महीने से ये रैली कई बार धरना कर चुका है। हम लोग 3 साल से 20 में लगातार कर रहा है। मतलब सरकार से कोई जवाब नहीं आया? नहीं मिला, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? सब चलते रहेगा, हम लोग का धरना चलते रहेगा, हम लोग का सब चलते रहेगा। Leaders and members of the All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association (AKMTTA) and the All Shillong Taxi Association on Sunday gathered again at Umayam to express their protests over what they described as the state government's failure to take their concerns seriously amid the tensions that have risen between commercial vehicle operators from Assam and Meghalaya. The association leader also alleged that the government was treating them unfairly. They said that during the meeting between the ministers of the two governments on Friday at Kanapura, Assam, the Meghalaya government decided to compensate the owners of vehicles from Assam that were damaged in Shillong, while nothing was said about Meghalaya commercial vehicles that were damaged in Assam. The association leader further expressed disappointment with Deputy Chief Minister Snuan Plang Dar, saying that after returning from the meeting, he did not say anything about the protest, whether at Umayam or Praini Hut. They alleged that when he arrived at these places, he simply passed through without speaking to them, which they said showed that he was not taking their protest seriously.
Halor kata ka jingkali ga ba phila bu ka e ga ba kumtu flai I menen men singi lai sin sausi kumtu nilai yo ka jing trelang wat nadu kibriu shnong kibriu ka an kumtu niat ka jing jai te karai ga ba mata si ka long bang yo khbor men step ba nagaleng government ko ong ba kan khot sakami ki jing kren mo nga supla bagani tangani ga government Meghalaya ka pamenta NDA tu ka ba kam jumap su iksison di kada kamon maka kan khot chiteng meet ke meeting da kamon maka kan khot chiteng sngi kan mon maka kan khot ru bujim step ngaso phla ba sondi kan don ka sket ret kan plite kata ka bang supen ngo phai ngi kum kinong lam jong ka nong nya kali kamai terus ke banang ni po jela Meghalaya hoi halo ka statement ka bang ala pensyai kumang mela ong kum to na kalian ki asen ki phek phek ki bengi don hang ni ki terus taxi don lagi jong jong kinong lam mo ko batip ibak marak iwe bala don lang bat ngindu menta do ni sngi mentaru nagaleng jungi kalong bangin pen bet bangin num naik hiru syakatai ka jela asam ban kamai kali nagaleng kinong nya kali kamai ke jela Meghalaya nginum naik chitai ka jela Meghalaya asam ban naik kamai bat nagaleng kinong nya kali kamai jela asam ru ki commercial jimbet chu banwan kamai hapok ka jela jong Meghalaya jungi kata kadai ka stan ka bangila yeng bat ngin ya la long sakonum no ngin ya sakonum no ru ngin ya kata ka benta ka ba ngilabu ya ka agenda ka bang niat dan ka thong ka bang ikwa na kaleng ginong nya kali kamai ke jela Meghalaya ko jing peni bo na kaleng magistrate bat ki pulit ngahi na ladi ngala kren ni magistrate magistrate ngong ba pi be yang ni nang ni ong bai tang ka wei kni ladang impat yo ban ya kren pat ki pra tribal bar khoi ki badan hang ni angin long meeting sipor mentan sipo khatsan mi untuk nilai iyo ban syong bat ki karai ka bami nak kesur ki babun hi kinong nya kali kamai bat ni kinong yalam kolong baik bangin ngin yeng be hang ni ban phai kali asam sami sapo jela asam kali kamai na po asam ban phai kala be asam. More news coming in regarding the interstate commercial vehicle issue between Meghalaya and Assam. The Assam government on Sunday held a meeting with several drivers' associations to discuss the ongoing tension. The meeting came a day after a high-level meeting between the Assam and Meghalaya governments in Guwahati, where both sides discussed measures to ease the tension and restore normal movement between the two states. Addressing reporters after Sunday's meeting, Minister Atul Bora said representatives of around 14 drivers' organizations participated in the discussions and raised several long-standing concerns. Bora said the government is deeply concerned about the situation and that further discussions are being held with the Meghalaya government to resolve the matter. He also said that a coordination committee headed by the IGPs of both Assam and Meghalaya had been decided upon during Saturday's high-level meeting to coordinate efforts between the two states. Meanwhile, Jadav Kumar Ingti, advisor to the 7-state tourist cab operator union, said the drivers' representatives had discussed the issue with the minister, police officials and the transport commissioner. According to Ingti, the drivers had sought clarity on when vehicle movement between Assam and Meghalaya could resume. After yesterday's crucial meeting, that crucial meeting which was held in between government of Assam and government of Meghalaya, I met along with police commissioner the picketers at Jurabad, and I invited them today. 14 organizations came and we had a long discussion with them. They have placed before us some core issues. They have been facing some problems since long back. So we have told them that yesterday also in our discussion some issues took place. So they are waiting, they are asking us when this vehicle will be, started. So basically, issues are some other part of the exactly how difficulty will be ensured in the Meghalaya side. They have assured us. Today also,
after having discussion with our honorable Chief Minister. The Meghalaya government is also set to convene a high-level meeting with the Commissioners of Transport in Assam and Meghalaya by September 10 to address long-standing grievances raised by transport associations over difficulties faced by drivers travelling to Guwahati. Deputy Chief Minister in charge of Transport, Imphal Dar said the tourist taxi associations from Meghalaya and Assam will also be called for the meeting, which will seek to address the concerns of drivers and transport operators from both states. Dar said the meeting would focus on the concerns of drivers and transport operators from Meghalaya, which according to the associations have faced difficulties while entering and travelling through Assam. Senior officer from Home Department and both DC from East Kasihil and DC from Riboy and along with their SP, and in the presence of all the member of the different tourist taxi association from the state of Meghalaya, and after a third discussion, so we have come to the conclusion this was a very fruitful meeting. Yes, the association flagged some important issues for the last few months, few years, which have faced problem as soon as when they enter the state of Assam. So, and we listen their problems, and yes, their problem is also very genuine. So, we have come to the conclusion that within 10 of September, I will be calling a meeting at my level with the Commissioner of Transport Assam and Meghalaya, and in the presence of all the members of association from us and along with from Assam. So date is yet to fix. We will try to solve all the problem which our driver face during their trips to Guwahati especially. And their concern is very genuine. I'm very thankful to them. It was a very fruitful and very genuine issue. So hopefully by meeting both the state, so it should be, the problem should be solved in future. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.